What's up, people? How are you all? हेलो हेलो। कैसे हो भाइयों? आज है एनएफपी। तो अपन लंदन में वैसे कुछ नहीं करेंगे। दिस वुड बी जस्ट अ चिल सेशन। लेट्स सी हाउ मार्केट्स आर moving and what next we can expect. We'll do some anticipations, we'll do some chill, and then we'll just fuck off and sleep and then come in the afternoon, no, evening, और मचाएंगे फिर। ठीक है? Those people who are new, I know most of the people are not new. You are my regular one. But if you are new, consider subscribing this channel. और भाइयों, सब्सक्राइब कर देना because I'm thinking of converting this channel to the actual channel. By the way, if you have any idea, and please, like Ashwin, I guess you should be having, like you are in a community जहाँ पे content creators और होंगे, like लोग होंगे. So if you can please ask that if let's say this channel, if I continue with this channel, will that be a problem? Because I have not did proper SEO, nor I have updated any thumbnail, nor I have a banner. I will just update all of that today itself, or maybe weekend itself. But all I want to know that is, can I continue with this channel, or is it like, will it be good if I create a new one? Because I already have 155 hours of watch time, 155 hours of watch time on this channel. So नहीं, बस ऐसे नहीं कि बनाना है इसलिए बनाना है। बस ये है कि अगर मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ तो इसको बूस्ट मिलेगा, राइट? बिकॉज आई ऑलरेडी हैव फ्यू सब्सक्राइबर्स, आई ऑलरेडी अपडेटेड फ्यू वीडियोस। सो इसीलिए अगर हो, बिकॉज आई बिलीव दिस चैनल शुड बी अ ईयर ओल्ड. So if you can just ask someone who has already did something on YouTube, that if a year-old channel which was inactive, which has never updated any video, if they decide all of a sudden, because the channel is created, like the YouTube channel, literally the channel, not the account, but YouTube channel has been created a year back, almost 1.5 years back. Like, will it actually restrict my reach? What exactly it is, like, I would really love to hear from you. If you have any reference, any YouTuber friend, or if you are in any of the community, Ashwin especially, if like, you can just please ask your mentors there, who are content creators, if I can use this particular channel. You just give it like some example, or ऐसे ही पूछ लेना कोई भी example देके, like if there is channel which is a year old, they have created a channel a year old, and will it be fine if they can just continue on the channel? uh the main concern is, will my reach be affected or no? That's it. Okay, so let's actually get started with life. And I hope my screen is visible. Any reason why SEO is very important होता है? प्रॉपर्टी वन से जब आप थंबनेल डालोगे तो बूस्ट करेगा न्यू चैनल को। अच्छा, it's always better to use the oldest channel. देखा? तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपके एक्सपीरियंस में, बिकॉज सी इंस्टाग्राम का अलग है, इंस्टाग्राम में न्यू अकाउंट बनाना इज प्रेफर्ड बिकॉज इट विल पुश मोर। मतलब अगर मेरा जुड़ा होता, दैट वाज प्योरली रिलेटेड टू ट्रेडिंग, सो डेफिनेटली वो ही पुश कर जाता। लेकिन यहाँ पे आई हैव, लाइक, दिस इज द ब्लैंक स्लेट, काइंड ऑफ ब्लैंक स्लेट. तो इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन जस्ट आस्क एंड लेट मी नो. That would be a great help, guys. Okay, so let's actually talk about what's happening and where we are right now in terms of markets. All right, let's actually get started. So let's start with EU. What's happening here? EU is bullish, and this high is supposed to be taken out now. This inefficiency is supposed to be filled. We can potentially look for longs, but are we supposed to look for, like, are we supposed to enter now? So the answer for me is no. I will just wait and see how price builds up, because maybe price can hold around for a good time. Maybe NFP can sweep down lower and then it can push up high. Because if we have a look at dollar index started showing weakness, right? And as we discussed and anticipated, that this low is supposed to be taken out. So maybe some liquidation. Actually, liquidation यहाँ पे नहीं expect कर रहा, थोड़ा drop देके फिर एक liquidation and then a continuation. या तो NFP will just quite aggressively push down lower, dollar will push down. So that will actually push the EU higher.
and the overall directional anticipation that we are expecting from the markets can be fulfilled. Now, the new candle that is printing on daily time frame, it's showing trend towards buying. So it would be great if we can just continue to look for longs and expect these highs, and at least this inefficiency and this liquidity is supposed to be filled is what I'm seeing right now. So folks, लॉन्ग्स ही लेना है, बट ये है यहाँ पे लेके स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखना सेंस नहीं बनता. अगर रिट्रेस करता है ये एरिया में आता है, लॉन्ग्स लेंगे भाई. और ये पहला टारगेट ये इनएफिशिएंसी रहेगा, नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा अपना दीज इक्वल हाइज. ओके, दीज आर सपोज टू बी टेकन आउट. ओके, सो ओके ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं फैंडी. हाँ जी, तो बायस यहाँ पे लॉन्ग है, लिक्विडेशन रिएक्टिंग फ्रॉम अ नाइस डिमांड, order flow build up, nice order flow holding. Even if we just try to go in smaller time frame, this looks like a very good nice demand area. So if prices show up within this, we can actually look for longs, because here we have some potential liquidity available which prices can actually sweep and can continue to look higher prices. Coming to gold, I'm skeptical because we are at an all-time high level. Gold can actually do thoda sa weird shit, but overall, if you remember, we have marked 1.272 level, like using FIPS. So the next available drawn liquidity should be at around this area. Early, see, these are ratios. So ratios work, and that's the reason I'm just relying ki, I'm expecting there is more room to the upside. And it's quite possible that price can just push up higher. But I would also not be surprised if, like, overall the intention is buying only. But if you remember, we have marked few specific areas down here, right? If we just see, this area is a good one, which prices have left unmitigated, and this range overall is also unmitigated, right? So if prices right now are anyway showing weakness, we can't really see a lot of strength here. So, just like how we predicted. Yeah, अंधेरा हो गया यार. Yeah. Focus. हाँ. सो जैसे हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि ब्रो यहाँ पे वीकनेस आई है, प्राइस ड्रॉप देगी, प्राइस ने दिया. हमने एक्सपेक्ट किया था ये लिक्विडेट करके यहाँ से भागेगा, लेकिन और थोड़ा नीचे आया, और हमने यहाँ से भी एंटिसिपेट किया था दैट इट विल वर्क. ब्रो, वर्क ऑफ आर्ट. वर्क ऑफ आर्ट सही बोला क्या मैंने? जो भी, whatever. So if prices happens to dip down lower from this area or just after the mitigation of this range, we'll still continue to look for longs. And once we get an order flow shift, we will expect that 1.272 level to be achieved and to be hit. So that is what my immediate anticipation on gold looks like. Okay. So this is the level that I am expecting to be taken out. I'll just mark it. I'll just lock it. I'll place alert on it. And the next thing is I'll lock it. Yep, boy. तो अभी फिलहाल के लिए अपना डायरेक्शन एंटिसिपेशन ये कह रहा है कि यहाँ से अगर नीचे आता है तो लॉन्ग्स लेंगे. ओवरऑल बायस बुलिश है, लेकिन एनएफपी का वेट करेंगे एक्चुअल एग्जीक्यूशन के लिए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट माय एंटिसिपेशन लुक्स लाइक. विल जस्ट वेट फॉर सम टाइम. कमिंग टू यूरो, जैसे मैंने बोला लॉन्ग्स ही लेना है. यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा. तो उसमें मैं उतना ज़्यादा, और मेरा मन भी नहीं है ट्रेड लेने का ऑनेस्टली. तो आई जस्ट चिल, and that's the reason I'm here with you, not just to time pass but to educate you and just to tell you how exactly I look at the markets when I come in front of the charts. Initially what I look, so we started out from daily time frame, we started looking where exactly we are and what next we are expecting in the markets. Now as per our anticipation, this inefficiency is supposed to be filled, so we have marked our available level of liquidities and where potentially prices can go based on daily time frame. Then we move to Forex and we see that, oh, okay, what is happening? Okay, it has swept liquidity. Okay, what is the next targeted level? The next targeted level is this high, but as per the daily, the immediate targeted level is this. So eventually maybe this high is also supposed to be taken out because the
daily and weekly order flow is holding bullish. So as per that, we can see a lot of rejections coming from here, even though it has consolidated for almost a month time within a range, but still the targeted high is this and this. So eventually, as if the weekly order flow holds up, it was a rant वैसे. If the weekly order flow holds up, we can actually see price pushing up higher, and this inefficiency eventually to be filled. तो ये है. YouTube is search based and Instagram is trend based. तो भी एक बार पूछ लो ना मेरे भाई, मेरी चिंता नहीं करोगे. So, हाँ जी, तो वही बात है that the next available draw on liquidity would be around this. If price sweep this, you can actually see this demand area holding. I don't know why I marked this. Oh yeah, I marked this because this is a beautiful, beautiful demand area which price have left unmitigated. So I will expect a draw on this. Coming to gold, again the same. I'm just repeating it. If prices happens to retrace down lower, because as we can see here in 1 hour and in 15 minutes, prices are holding bullish, and we have in fact monetized and capitalized the moves happening over here. But right now we can actually see that there is weakness in the markets, and I'm not really willing to enter in longs right now, because anyways mood nahi mera. And markets भी उतने सही नहीं है. We'll wait for the NFP results to be out, and then we'll see what can be done. But as per my, just based on market structures and just based on our analysis that we do, what I can see on daily time frame is there is a fair chance that price can actually push slightly down lower. But even if during NFP price just give a quick flick to the upward direction, I'll just continue to look for longs till my TP got hit. Or if I get flicked to the downward direction, the anticipation and the bias remains the same, I will be continuing to look for longs from these areas. So this is my direction anticipation in gold. Nextly, it's been ages I have not really looked at what's happening in German index. But anyways, who cares? Coming to US 100 boys, we actually killed it yesterday. If you see, this was our TP. TP got hit, bro. TP got kissed. TP got kissed very beautifully, and in fact, it's pushing up higher more. So let's, like how good I am, bro. How good I am when it comes to analysis. लाइक हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से नीचे जाएगा, फिर हमने यहाँ से एक्सपेक्ट किया था यहाँ से ऊपर जाएगा, वही हुआ. उसके बाद में हम देखेंगे 4H टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है. तो लेट्स गेट रिड ऑफ, आई डोंट वांट टू बट आई हैव टू. इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दिस, आई विल जस्ट ऐड इट टू अ ग्रुप एंड आई विल जस्ट हाइड दैट ग्रुप. ठीक है. सो अभी मेरे पास टच वुड, बिल्कुल भाई, टच वुड, बैंग वुड. So next, what I'm expecting is this high to be taken out. Now here we do have like available liquidity below this just based on daily time frame. Okay, and we have this big ass inefficiency left, which is not necessary price will sweep, but let's actually initially mark this inefficiency. Then nextly we have some very sexy and nice beautiful demand area जहां से कल अपन ने बाइंग करी थी. ठीक है, जिसने मस्त सी सेक्सी लिक्विडिटी स्वीप करी है. ठीक है, तो अपन यहाँ से ये स्वीप एंटिसिपेट किया, लॉन्ग लिए, तो अभी ये डिमांड वैलिड एरिया है. ठीक है, फॉर अस टू कंटिन्यू टू लुक फॉर लॉन्ग्स. इफ यू हैव अ क्विक लुक ऑन वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम, ओवरऑल द हायर टाइम फ्रेम इंटेंशन screams it out loud that most probably this high is supposed to be taken out as per the market structure, as it is holding super solid bullish, right? We has taken out this high, price came within a discount, failed, and now we can see really solid aggression. Look at the daily candle close, it's really amazing. It's fucking amazing. So in 4H time frame, what is the next available draw on liquidity is this and this. And in fact, all of these levels which you will be noticing here, every single price action here is liquidity. This is your future. This is your future. I'm sorry. This is your future liquidity. All of these levels are your future liquidity.
तो अभी फिलहाल इन सब का इतना तो अपन को ध्यान नहीं रखना. आई जस्ट reduce the opacity. So these are all your future liquidity levels, but immediately what is our target? Let's actually narrow down now. Let's go to 1 hour time frame, and as per this, what I can see is if this high is supposed to be taken out, okay, it has moved beautifully from this test on demand, and it has pushed really nicely. Boys, this high is the area जहां से buying आ सकती है. So NFP क्या करता है, इस पे सब डिपेंड करता है. Let's say NFP actually push down lower to this area, something within this. Will be looking for longs after a structural shift, after a order flow confirmation, and eventually targeting these highs. But what if NFP actually push up higher, which is also a very, 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 very possible scenario, right? तो अपने पास ज्यादा कुछ नहीं रहेगा करने के लिए. या तो ऐसा हो कि एनएफपी ऑल टाइम हाई ही ब्रेक कर दे, जो कि कितने पॉइंट्स का मूव बनता है, 300 पॉइंट्स इन अ सिंगल डे. वैसे तो पॉसिबल, बट actually it's possible as well. If price want, it can just like sweep all of this in one candle. और वैसे भी अपना न्यूज़ जो है वो 7 बजे है, राइट? तो 7 बजे, सॉरी 6 बजे है. 6 बजे से 7 बजे तक प्राइजेस विल हैव इनफ टाइम टू डेवलप. और 7 बजे अपना मार्केट ओपन होता है, और अपन को 7 बजे एंट्री नहीं करनी, अपन आराम से करेंगे. तो 8 बजे तक अपन को कुछ क्लैरिटी मिल ही जाएगी. और नहीं भी मिलती तो भाई सो जाएंगे मस्त. वीक बहुत सेक्सी है भाई, मोटा पैसा. तो है ना, like it is not necessary that every day will get trades, but if we will get something as we are expecting, what is that? If we get a dip down lower, NFP sweeps, and if we get a slight order flow build up, prices start pushing up higher, bro, I'm entering longs, and this would be my targeted high, and eventually all of these highs are supposed to be taken out. But looking at the immediate shit, this high is supposed to be taken out, right? So this is what our anticipation looks like in NQ. यही बायस है अपना यार, और तो कुछ नहीं है. बाकी अगर इनफैक्ट ये पुश भी करती है ना ऊपर, तो शायद मेरे को लोअर हाइज लोअर लोज देखने मिले, तो शायद मैं शॉर्ट भी कर दूं. लेकिन ये सब मार्केट आवर्स पे ही डिपेंड करता है, हाउ प्राइसेस आर बिल्डिंग अप. आई विल जस्ट बेस माय ट्रेड ऑन, ऑफ कोर्स सम इनिशियल बायस इज देयर इन मी, दैट इज these highs and this high is supposed to be taken out, but we want a alignment in prices as per that. जैसे कि यहाँ पे हमारा प्लान था शॉर्ट, तो prices align and we just executed. We didn't enter as soon as the market opened. What price did as soon as it opened? It sweep. कहाँ पे? Yeah, it sweep up higher. It sweep the liquidity out and then it dumped, right? So we'll just wait for prices to do its thing, and then we will base our trade as per our anticipation that okay, this liquidity is supposed to be taken out. Boom, price did that. What next? अभी यहाँ से buying आई और order flow बनेगा, long लगे, boom, आई एंट्री. तो प्लान अभी ये है कि नीचे आएगा, लॉन्ग्स लेंगे. आफ्टर दिस मे बी दिस इनएफिशिएंसी का 50% या उसके थोड़े नीचे आए, यहाँ कहीं आए, लॉन्ग्स ही लेंगे, ठीक है. और अगर ऐसे ही ऊपर भाग जाए तो ऊपर ऊपर जिस तरह का प्राइजेस बनेगा उस तरह पे सोचेंगे क्या करना है. बट वी हैव इनफ टाइम टू रिएक्ट बिकॉज एनएफपी इज एट 6 अगेन आई एम सेइंग, एंड वी विल बी रिएक्टिंग एट अराउंड 7:30 8 एग्जीक्यूट करेंगे. एक छोटा 1:1 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड एंड डन फॉर द वीक, ठीक है. सो लेट्स सी how many people are watching us. 16. 16. Okay, cool. तुम्हें पता है, आई एक्चुअली started my content creation journey
Like I just started and end in between. I just stopped. It was back in 2019. भाई रात रात भर बैठ के वीडियो एडिट किया करता था और उसमें मेरा पीसी बीच में ही क्रैश कर देता था. इफ यू नो दैट स्क्रिबल ये देर वाज सम सॉफ्टवेयर जिसमें वो पता है हैंड से ड्राइंग बनाया हुआ एंड यू जस्ट नरेट समथिंग एंड देन यू लाइक वो रात रात भर एडिट करता था मैं. Let me see if I can just you know have like if I have that account, it would be fun. Switch down. Come on, come on. या वो एनिमेशन वाला और वो मैं खुद बनाया करता था भाई. क्रेजी फाइनेंस रिलेटेड ही कंटेंट बनाया था. और यू वुड एक्चुअली नॉट बिलीव मी ब्रो. मेरे को उस कंटेंट पे 500 के ऊपर व्यू आए थे वो टाइम पे. लाइक बैक इन 2019. Just give me a minute. I'll just like hang around for some time. I'll just show you. हम यूरो का चार्ट ओपन करके रखते हैं. इफ वी गेट समथिंग वी विल एक्ट ऑन इट. अभी तो अभी अभी और लाइक देयर इज नो कंपैरिजन बट ऑल आई एम सेइंग इज भाई if you would have like or if I would have continued to do the same shit, I would have at a very 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 different place right now. I would have made like millions of dollars through brand deals or something like that. Maybe I would have been end up being a finance creator. But of course, जहाँ पे मैं हूँ, that is definitely great. I'm really grateful of all the things, but I wish I would have continued. इंस्टा अकाउंट भाई. तो अरे कल पता है कल मैं बैठा था लेकिन मेरा रात 2 2:30 बजे तक मीटिंग था एक बंदे के लाइक द फ्रेंड हु इज अ मार्केटर. ही इज हेल्पिंग मी विथ थिंग्स सो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हिम. तो उसके वजह से सीन हो गया. यो बॉयज आई गॉट इट ओके. आई गॉट दिस चैनल. आई विल. आर यू इंटरेस्टेड टू सी दैट. लाइक वरना तो पॉइंट नहीं है. अगर इंटरेस्ट होगा तो ही मैं फिर यहाँ पे मेरे को अकाउंट ऐड करना पड़ेगा वो. भाई 10 तो रिप्लाई मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और लाइक द स्ट्रीम बिकॉज somehow YouTube algorithm pushes the video more if it is liked, so please. YouTube Studio content. Oh yeah. Oh yeah. Okay. I am showing you this. Okay. I am just showing you this. So अच्छा ये वाली स्क्रीन कैप्चर कर रहा है. Okay, I hope my screen is visible. So I'll just add macro screen audio. You will be very like when you listen the audio, no, you will laugh. Like it's so childish audio. I'll just like share. Just give me a minute.
हेलो दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के पास अभी फिलहाल 1000 रुपीज होंगे और उसके साथ साथ आपके ऊपर लाखों का It's crazy, right? Listen more, listen more. एजुकेशन लोन भी होगा उस डिग्री के लिए जिससे आपको शायद ही जॉब मिले। दोस्तों, अगर आपने वही 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते स्टॉक मार्केट में तो शायद वो आज 1100 रुपीज में कन्वर्ट हुए रहते। That was like kind of edited. यानी आपके पास कल से ज्यादा पैसे आज होते। आप भी सही स्टॉक में पैसे लगाकर अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हो, बिल्कुल राकेश झुनझुनवाला सर और कई अच्छे करना होगा। और वही अगर कंपनी शेयर्स बेचती है आम जनता में तो कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना होगा, इसलिए कंपनी शेयर्स इशू करना बेटर ऑप्शन समझती है। अब एग्जांपल कंसिडर कीजिए, XYZ कंपनी है जिसे एक्सपांड करना है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है और आज के डेट में उस कंपनी की वैल्यू 40 लाख रुपीस है और एक्सपांड करने के लिए वो कंपनी को 30 लाख रुपीस की जरूरत है। तो कंपनी 30 लाख रुपीस के शेयर इशू करती है, यानी वो लोगों को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से शेयर खरीदने का मौका देती है। अब आप सोचते होंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है, तो ये सब कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी 10 रुपीज की फेस वैल्यू के 3 लाख शेयर्स भी इशू कर सकती है और 5 रुपीज फेस वैल्यू के 6 लाख शेयर्स भी इशू कर सकती है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी जितने कंपनी को पैसे जुटाने हैं वो अमाउंट हमेशा फिक्स रहेगी, यानी 30 लाख रुपीज। चेंज होगा तो वो बस नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू। किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने के दो तरीके हैं, प्राइमरी मार्केट यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से या सेकेंडरी मार्केट से। सबसे पहले प्राइमरी मार्केट देखी कंपनी Bro, है। if you watch this video, no, I have like literally explained so well. Like, I believe I'm just a good teacher, man. Like, in fact, like back then also, do you feel it's actually good the way I have conveyed the things? भाई इसके बाद में सेकंड वीडियो देखो, ठीक है? नाउ दिस इज द सेकंड वीडियो, क्या? और लुक एट द व्यूज ब्रो, लुक एट द व्यूज। देन दिस इज द सेकंड वीडियो। Look at this thing, man. Like, fuck, so much effort, so much effort, so much efforts. क्या आप सभी चाहते हैं कि आपके पैसे आपके लिए काम करें और आने वाले समय Bro, like back then, I used to write hooks, man. Like, it was not like hi guys and things like that. It was like properly asking questions. Bro, shit. Like, if I would have continued this skill, happy Teachers Day. Thank you. Happy Teachers Day to you guys as well. में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो वेलकम एवरीवन, आप सभी का टेड स्टॉक्स में स्वागत है। इस वीडियो में टेड वो टेडएक्स जो है ना, मैंने वहां से टेड लिया था और मैंने सर्च किया इसका मतलब क्या, मेरे को याद नहीं है, तो मैंने टेड स्टॉक रख दिया था। हम बात करेंगे 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और उनके प्रोज। क्या आप सभी चाहते हैं कि आपके पैसे आपके लिए काम करें और आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो वेलकम एवरीवन, आप सभी का टेड स्टॉक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो पहला बेसिक इन्वेस्टमेंट है रियल इस्टेट। अब कौन की बात करें तो रॉन्ग कंपनी कैसी। ट्रस्ट मी गाइस, मैं रात भर, मतलब मैं लिटरली 15 20 घंटे, एक तो मेरा पीसी बहुत बकवास था, लाइक इट यूज्ड टू स्टक ऑल टाइम। आई स्टिल हैव दैट वेट। So this is my first laptop of my life. This is the very first laptop, okay, on which I started things, on which I started trading. I have learned things from this laptop. I still have some videos in this. I still have a lot of screenshots in this laptop of trading charts. So it's actually crazy. And like this laptop, you like वो handle नहीं कर पाता था ये software. And like मुझे
20-20 घंटे लगते थे और रेंडरिंग बीच में ही क्रैश हो जाता था। रेंडरिंग के लिए अनदर 20-25 आवर्स लगते थे। तो मतलब मैं रात रात में उठ के देखता था हुआ क्या हुआ क्या। एचपी से लिटरली एवरीथिंग एप्पल तक का सफर। क्रेजी क्रेजी। Look at this, okay? I got fucking how many videos? How many views? 642 views back in 2020. Crazy, right? I have literally never showed this to anyone. I have created Instagram channel as well. I have written things as well. ये टाइम पे तो चैट जीपीटी भी नहीं था, तभी भी मैं पता नहीं कैसे, बट हाँ मैं कर लेता था भाई ये सारी चीजें। फक, दैट्स क्रेजी। It's all about a value investing, online money making tricks, money management, and enhancing your financial knowledge regarding various financial instruments such as equity markets, futures and options, bond market, commodity market, and other informative details about stock markets. Soon I will be posting a series titled "Basic of Stock Markets." Crazy. भाई ये वीडियो की अभी ऑडियो सुनो क्या। Back then during this time I was like, I started seeing some money coming in through markets. इसका आवाज काफी अच्छा है, बट ये आवाज कम क्यों आ रहा है, आई एम नॉट श्योर। Oh, wait. You can't really see my screen, right? Now you can. So this video, I got like almost how many views in this one? uh हाँ, यही वो वीडियो है जिसमें मेरे को काफी अच्छे व्यूज आए थे, कुछ 600 समथिंग समथिंग। ब्रो, क्रेजी। एंड को ये थोड़ा नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वीडियो। हेलो एवरीवन, आप सभी का टेक स्टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाई वन शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अर्ली। कहीं इन्वेस्ट किए होते तो सिनेरियो क्या होता, जैसे कि आप देख कंपाउंडिंग और वो सारी चीजों के बारे में बताया। चालू की थी। Bro, तो वीवो बोलते like, and look at the consistency, okay? Look at the dates I have updated these videos. I wish जून, सॉरी मई से स्टार्ट किया है। मई मतलब ऑलमोस्ट मेरे को 10 दिन लगते थे ये वीडियो स्क्रिप्ट। और तुम्हें पता है तब मेरे पास कार थी, और मैं कार में जाके, बिकॉज घर पे आवाज शोर शराबा होता था, मैं कार में बैठता था और रिकॉर्ड करता था माइक में। तभी मैंने ये वाला माइक लिया था। अरे अरे, आई गॉट दिस माइक देन। ये तब का माइक है, स्टिल दिस वर्क। Crazy, crazy man, crazy. Ah. Look at this, all the screenshot I have taken from some applications. करता है एट द एज ऑफ Comparison, animations, everything was done by रुपीज me. पर मंथ इन्वेस्ट करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स एंड एट द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर मंथ। तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 2,45,000। बाय द एंड ऑफ 20 इयर्स ही विल गेट 10,50,000 ऑफ 12% पर मंथ। उसके रिटर्न्स ज्यादा है। ये है पावर ए प्लस 80 है, क्योंकि Insane. जितना स्टॉक्स रिटर्न नहीं कर पाता उतना क्रेडिट Insane, man. Crazy. And exactly that was the reason I actually thought of why not. I have idea of everything. I have ideas of stock markets.
Why not to create content around it? I wish I could have continued that channel. But ठीक है, everything happens for a reason. तब मैं शायद बस कंटेंट क्रिएटर बना रह जाता. अभी मैं ट्रेडर हूँ, अभी मैं ट्रेड्स लेता हूँ और मैं ट्रेड्स देता भी हूँ और मेरे ट्रेड्स वर्क करते हैं. लोग मेरे ट्रेड कॉपी करके प्रॉफिटेबल बनते हैं या पैसे तो कमाते ही है. प्रॉफिटेबिलिटी, actually there are a lot of people who got profitable after joining me. Not every, see, there's again another perspective towards thing. अगर let's say 100 लोग है, 100 लोगों में से 100 लोगों को खुश करना, it's like very godly thing. There will always be disappointments from the people's end. Like I can't really please everyone. So उसमें से let's say even if I was able to make 100 में से एक भी बंदा change होता है और उसको समझ आती है चीजें, I did magic. And back then when I was live, I actually have changed a lot of people's life. A lot of people have shared me $100,000 के withdrawals. I was like, oh fuck, that's crazy. And it's quite possible and achievable. And the TP got hit over here. How many live people are watching us? Nashant on shots. 14. 14. Actually, मुझे वो वीडियो का एनालिटिक चेक करना था. वीडियो का एनालिटिक चेक. Three. Just give me a minute, okay? Meanwhile, you can look at my face. I look good. You can. It's your choice. Mm. Bro, look at this, man. This looks so good. This video itself has given me 16 hours of watch time. Like the average duration is of course like shit. But yeah, I was new, man. तीसरा वीडियो में. तीसरा नहीं, ये पहला वीडियो है शायद. ये पहला वीडियो है. 59 सब्सक्राइबर्स I got. This anyways graph always looks like this. But yeah, 41% of the viewers are still watching. Typical. Attention. ठीक है, नहीं चाहिए भाई. Reach. Questions with rate. इसका मेरे को अभी मतलब समझना पड़ेगा. आई डोंट रियली नो. एक्सटर्नल ट्रैफिक फ्रॉम वेबसाइट और ऐप दैट हैज एम्बेडेड योर वीडियो. हाँ, ये व्हाट्सएप से आया होगा. चैनल पेज, अदर यूट्यूब फीचर्स, traffic from within YouTube that doesn't fall into any other category such YouTube search terms and browsing feature. अरे व्हाट्सएप से लोग आए थे. It's crazy. Anyways, let's actually jump on chats.
जैसे मैंने कहा, आई डोंट रियली हैव मच ऑफ इंटेंशन टू एग्जीक्यूट एनी पोजीशंस. सो जो इंटेंशन EU में था, इट गॉट अकॉम्प्लिश. एज आई सेड, लाइक फ्रॉम हियर इट्स गोना मूव. इट डिड, बट it's fine. And like, you should not feel FOMO about, because every fucking day you get trades. What's the point of feeling FOMO and miserable about missing trades? So it's fine if you miss out on trades. You just, like, if anything that fits your plan, you should have that balls to go ahead and like capitalize, just execute that trade. Right now, gold is reacting from a demand. It would be interesting to see how price react of this. We are not entering anyways. भाई, अगर तुम्हें कल याद हो, तो कल हमने, इफ यू गाइज रिमेंबर, या फ्रॉम दिस एरिया, bro, what happened here? I was not interested to enter longs. Exactly, price dip down lower, sweep, and then it start building order flow. Boy, oh boy, when it was doing this, I asked to enter longs. Boys, enter longs, keeping this or this as a stop loss, I believe, and exited major positions around this. Fuck, what a crazy trade, man. And you just need a small sweet chunk of a bigger move. You don't really need to capitalize. Imagine I would have expected ये हाई तो जाएगा एंड ही चुप जाते भाई. 1:3 लिया भाई, काम 25 करके खत्म. Then when this liquidity hunt happens, I don't know after that if we have entered or no. नहीं, उसके बाद तो नहीं लिया था कोई एंट्री. लेकिन after that also it has moved nicely. Now it is reacting of this area. We'll see how further price builds up, but we are not really looking forward to execute any trade in this. Okay, so yeah, that was about it. If you have any questions, please let me know in the comment box, because right now I'm free. I'll just answer to those and then we'll end the meeting, because anyways we are not executing any new positions. So if you have any doubts, let me know. And अश्विन एंड अदर पीपल, प्लीज व्हाट्सएप पे मुझे बता देना कि ये सेम चैनल चलेगा क्या, बिकॉज लेट्स एक्चुअली टेक थिंग्स सीरियसली नाउ एंड लेट्स स्केल दिस fucking thing, because we do have skills, we have capabilities, we can talk to people. I have handled crowd before. I know how to deal with people. So why should I limit? जब फ्री के पैसे खड़े हैं दरवाजे पे, लक्ष्मी को ना नहीं कहता. So eventually, when I grow, I'll just monetize those people. So shameless. I just speak it out. Fuck, crazy. ट्रेड वेट में फोन से ट्रेड ले सकते हैं, बट इट्स नॉट यूजर फ्रेंडली भाई. इट्स नॉट यूजर फ्रेंडली. इट्स नॉट यूजर फ्रेंडली. अब पास और कुछ पूछना डाउट होंगे तो प्लीज लेट मी नो. लेट मी नो. If I buy funding ticks account, the trades will be through trade08. सो लाइक पीसी से ही लेना पड़ेगा, या फिर फंडिंग टेक्स का खुद का टर्मिनल है? खुद का टर्मिनल नहीं है, आपको ट्रेडोवेट से ही लेना पड़ेगा. ब्रो, दैट्स अ वैलिड डिमांड एरिया, राइट? वॉट एवर यू आर मार्क्ड, या ऑफ कोर्स इट्स अ वैलिड डिमांड एरिया. इट्स अ वैलिड डिमांड एरिया.
But the thing is, we don't have. See, I'm not forcing markets to push down lower only. If it wants, it can just pump up higher and take out this as well. Overall, we know that our intentions are still bullish till the time we are reaching our hurdle, like our resistances. So I still see the potential in going higher, but it would be great if NFP can sweep down lower and push the prices to a much discounted area from where we will have more room to target. So abhi filal, I am not really basing my trades based on anything, but I'm telling you from here also, I would not be surprised to see even if from here prices continue to hold this low and consider that as a strong low. And if even if price push up around, I will not be surprised to see this. But it's just that, do I have to take that bet? So the answer to that is no, because I also see that there is a fair chance कि अगर NFP नीचे sweep करता है ना तो यहाँ से buying आ सकती है. तो I just don't want to get into that, क्योंकि अभी मैं ट्रेड लूंगा फिर मैं देखते बैठूंगा, उसका सेंस ही नहीं बनता. उससे अच्छा मैं शाम को आऊँ जहाँ पे भी स्वीप हो उस हिसाब से ट्रेड लूँ, या फिर ट्रेड ही ना लूँ आज, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ बोम्बास्टिक वीक. I don't really need to take any more trades. I'm pretty much done for the week. Maybe one trade I will execute today and done. That's it. I hope you got it. All right. So let's actually call it a day, as you don't have any of more doubts. So let's actually call it a day, and I will be seeing you all at 5:50 आसपास. Let's actually plan our trades then, and let's actually kill NFP markets as well. Let's see how price builds up. Meanwhile, not actually CC, but जब जब आएंगे चार्ट पे तब देखेंगे. तो मिलते हैं अपन. ठीक है, ध्यान रखना. I'll see you all in the evening at around 5:45 के आसपास. See you guys. Bye bye. Take care. Have a good one. I'll just sleep now. Bye bye. Good night. Oh, no good night. Bye bye. See you. Have a good one.